को ढूंढ रहे हैं, कोई अपने पिता को ढूंढ रहा है, कोई अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, लाशें बिछ गई, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। तो बजट एक तरफ है, लेकिन महाकुंभ में जो भगदड़ मची है इस पर भी सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है। फिलहाल ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको संसद भवन के बाहर की दिखा रहे हैं। तमाम विपक्ष के नेता, पक्ष के नेता, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। महज अब से थोड़ी देर बाद, लगभग 20 मिनट बाद जो है संसद भवन में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार लगातार बजट पेश करने जा रही है। इस बार के बजट में क्या कुछ बदलाव होने वाला है? माना जा रहा है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए इस बजट में कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। टैक्स रिजीम, जो टैक्स स्लैब है उसमें भी बदलाव किया जा सकता है, जिससे मिडिल क्लास के लोगों को राहत मिले। दो तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें उस समय की है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची और यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दही और चीनी खिलाकर जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मुंह मीठा करवाती हुई इन तस्वीर में आपको नजर आ रही होंगी। और दूसरी तस्वीर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ पर बजट को दिखाते हुए, बार बार उकीरित करते हुए इन तस्वीर में आपको नजर आ रही होंगी। तो इस बार टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हो सकता है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। पंजाब हरियाणा की शंभू बॉर्डर पर बीते 1 साल से किसान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। तो किसानों की भी निगाहें जो है आज के इस बजट पर टिकी हुई है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि अगर मोदी सरकार किसान हितैषी है तो इस बजट में किसानों के लिए भी प्रावधान रखा जाए। तो किसानों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के लिए या फिर शिक्षा के लिए, रेलवे के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये तमाम वो विभाग हैं जिससे इस बजट में क्या कुछ चीजें सामने आएगी, ये फिलहाल देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। पंजाब के वित्त मंत्री का कहना है कि पंजाब को विशेष पैकेज दिया जाए। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हमने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें हमने पंजाब के लिए एक विशेष पैकेज की मांग की है। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, हमें फसलों में विविधता लाने की जरूरत है और हमने एमएसपी की कानूनी गारंटी की भी मांग की है। तो अब से थोड़ी ही देर में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और बजट को मोदी कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्मला सीतारमण को दही चीनी खिलाकर मुंह मीठा करवाया है। और इस बार की बजट में कितना जायका होता है, मिडिल क्लास के लोगों के लिए कितनी मिठास होती है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, एमएसएमई के लिए, बेरोजगारों के लिए, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। यहाँ तक कि अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो विपक्ष लगातार मोदी सरकार को इस मसले पर भी घेर रहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू लगातार सिमटती जा रही है। तो ऐसे में रुपये की वैल्यू को डॉलर के मुकाबले मजबूत करने के लिए इस बजट में क्या कुछ प्रावधान किया गया है, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। महंगाई, रोजगारी, विकास दर, ये तमाम वो चीजें हैं जिसमें इस बजट पे में राहत मिलेगी या नहीं, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है बयान दिया था, संसद के सत्र को संबोधित किया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये जो बजट है मोदी 3.0 का जो ये पहला पूर्णकालिक बजट है, ये रिफॉर्म पर आधारित बजट होगा। बहरहाल इस बजट पर देश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार इस बार के बजट में टैक्स रिजीम में, टैक्स स्लैब में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। कैबिनेट बजट पेश होने से पहले 10 बजकर मोदी कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें जो है बजट को मंजूरी दे दी गई है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मधुबनी साड़ी पहनी है और यह साड़ी उन्हें बिहार में रहने वाली दुलारी देवी ने दी है। दुलारी देवी 2021 की पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं। वित्त मंत्रालय से जो है निर्मला सीतारमन निकल चुकी हैं और अब से थोड़ी देर में जो है निर्मला सीतारमन लोकसभा में अपना बजट पेश करेंगी। आज के इस बजट में उम्मीद लगाई जा रही है, संभावना जताई जा रही है कि 6 बड़े ऐलान हो सकते हैं, जिसमें पहला ऐलान है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें को घटाई जा सकती है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती से पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट सकती है। अभी पेट्रोल पर 19.90 रुपये और डीजल पर 15.80 रुपये ड्यूटी लगती है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स की इंपोर्ट ड्यूटी को भी घटाई जा सकती है और अभी इस पर 20% ड्यूटी लगती है। इससे मोबाइल जैसे आइटम सस्ते हो सकते हैं। गोल्ड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है और अभी इस पर 6% ड्यूटी लगती है और इससे सोना चांदी के दाम भी बढ़ सकते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII ने सरकार से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की सिफारिश की है। इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटने से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की लागत में कमी आएगी और इससे उनको बूस्ट मिलेगा। सरकार मेक इन इंडिया के तहत इस तरह की छूट दे रही है। पिछले बजट की बात की जाए तो पिछले बजट में सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी थी और इसके बाद अगस्त 2024 में सोने का सालाना आयात 104% बढ़कर 87,000 करोड़ रुपए हो गया था और अब सरकार इंपोर्ट को घटाना चाहती है ताकि व्यापार घाटा कम हो सके। दूसरी बात की जाए तो इनकम टैक्स में भी इस बजट में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। नए रिजीम के तहत 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री की जा सकती है। 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच के इनकम के लिए 25% का नया टैक्स ब्रैकेट लाया जा सकता है और अभी इसमें 6 टैक्स ब्रैकेट है। 15 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लग सकता है। नए रिजीम के तहत बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। एनालिमिट्स के मुताबिक सरकार चाहती है कि ज्यादातर लोग नए टैक्स रिजीम को अपनाएं। नए रिजीम पुराने की तुलना में ज्यादा आसान है और इससे दस्तावेजों का झंझट नहीं है। अगर न्यू टैक्स रिजीम की बात की जाए तो 3 लाख रुपए तक के इनकम पर 0 टैक्स है और 3 लाख से 7 लाख रुपए तक में 5% टैक्स भरना पड़ता है। 7 लाख से 10 लाख रुपए तक में 10% टैक्स देना होता है। 10 लाख से 12 लाख रुपए तक में 15% टैक्स देना होता है। 12 लाख से 15 लाख रुपए तक में 20% टैक्स देना होता है और 15 लाख से ज्यादा जिनका सालाना इनकम है उनको 30% टैक्स देना होता है। और वही अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की बात की जाए तो 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स देना होता था। 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स देना होता था। 10 लाख से अधिक में अगर किसी व्यक्ति का सालाना इनकम है तो उन्हें 30% टैक्स देना होता था। 3 योजनाएं पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़कर 12,000 किया जा सकता है। इस बजट में माना जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जा सकता है। अभी तक 6,000 रुपए दिए जाते हैं किसानों को, लेकिन अब उसका डबल कर दिया जाएगा। इस बजट में 6,000 की जगह 12,000 पीएम किसान सम्मान निधि को किया जा सकता है। तो सालाना 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए की जा सकती है। इस योजना में अभी तक 9.4 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। आयुष्मान भारत योजना, इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है और अभी आर्थिक रूप से कमजोर और 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को इस योजना का फायदा मिल सकता है
और इस योजना में 36 करोड़ से ज्यादा कार्ड बनाए जा चुके हैं। अटल पेंशन योजना की बात की जाए तो अटल पेंशन राशि दोगुनी की जा सकती है, यानी 10,000 रुपए की जा सकती है। फिलहाल मैक्सिमम मंथली पेंशन 5,000 रुपए है। तो अभी तक इस योजना में 7 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्टर हो चुके हैं। तो ये 3 योजनाएं जिसकी राशि को बढ़ाया जा सकता है इस बजट में, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना और अटल पेंशन योजना। और इसके बाद हम आते हैं नौकरी पर। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्णकालिक बजट है जिसमें नौकरी पर भी फोकस किया गया है, क्योंकि आज के समय में बेरोजगारी देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए इस बजट में क्या प्रावधान किया गया है, एक बार वो हम आपको बताते हैं। माना जा रहा है कि ग्रामीण इलाके के ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंटर्नशिप का ऐलान इस बजट में किया जाएगा। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको संसद भवन के बाहर की दिखा रहे हैं और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई वीवीआईपी काफिला पहुंचा है। जैसे ही तस्वीरें सामने आएगी, और ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे नौकरी की, तो एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति लाई जा सकती है। इसमें रोजगार देने वाली अलग अलग मंत्रालयों की योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाया जाएगा। ग्रामीण इलाकों के सरकारी ऑफिसों में काम करने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा हो सकती है इस बजट में, और ये इंटर्नशिप केवल ग्रेजुएट युवाओं के लिए होगी। और इसके बाद की बात की जाए तो विदेशों में नौकरी दिलाने में मदद के लिए इंटरनेशनल मोबिलिटी अथॉरिटी बनाई जा सकती है। स्किल बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए स्टार्टअप्स को सपोर्ट दिया जा सकता है। और जो पांचवा, आज के इस बजट में जो पांचवी सबसे बड़ी चीजें हैं वो है हेल्थ को लेकर। तो मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीट जोड़ने का रोडमैप बनाया गया है। हेल्थ सेक्टर का बजट करीब 10% तक बढ़ाया जा सकता है। पिछले साल हेल्थ के लिए 90,958 करोड़ रुपए दिए गए थे। एमआरआई जैसी चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क कम हो सकता है। और अभी इस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी की बात की जाए तो बेसिक कस्टम ड्यूटी 7.5% से 10% के बीच है। अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटें जोड़ने का लक्ष्य सरकार ने रखा है और इसका रोडमैप बजट में पेश किया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं मकान पर। मकान को लेकर भी लगातार सियासी संग्राम दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली में छिड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रही है कि अमित शाह ने ये घोषणा किया था जहां झुग्गी वहां मकान। तो मकान को लेकर भी जो है इस बजट में बड़ा प्रावधान किया गया है। तो सस्ते घर खरीदने की प्राइस लिमिट बढ़ सकती है इस बजट में। मेट्रो शहर के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्राइस लिमिट 45 लाख रुपए से बढ़ाकर 70 लाख रुपए की जा सकती है। यानी अगर कोई 70 लाख रुपए तक का घर खरीदेगा तो उसे सरकारी योजना के तहत छूट दी जाएगी। और अन्य शहरों के लिए लिमिट 50 लाख रुपए की जा सकती है। होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है और अभी ये 2 लाख रुपए है। तो ये 6 ऐसी चीजें हैं, चाहे वो मकान हो या फिर हेल्थ हो या फिर नौकरी की बात की जाए, इसके बाद अब पीएम किसान सम्मान निधि हो या फिर आयुष्मान भारत योजना हो, अटल पेंशन योजना की बात की जाए या फिर इनकम टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव के संकेत जताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये बजट मिडिल क्लास के लिए समर्पित होगा और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ओर इशारा भी किया था। तो अब से थोड़ी ही देर में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार इतिहास रचते हुए लोकसभा में अपना बजट पेश करेंगी और इस पर विपक्ष के नेताओं की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव
जयराम रमेश ने कहा है कि टैक्स टेररिज्म खत्म होना चाहिए। इसके बाद अखिलेश यादव का कहना है कि एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता महाकुंभ है। महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ मची और 30 लोग जो है वो अपनी जान गंवाए हैं, तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने महाकुंभ घटना पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मनीष तिवारी ने कहा कि ये एक रीत बन गई है कि साल में एक बार वित्त मंत्री आएंगे और वो देश भर की बातें करेंगे, नीतियों के ऊपर अपना व्याख्यान करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि केंद्रीय बजट पर मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये बजट आम आदमी का बजट है। केंद्रीय बजट पर मोदी कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है और लगातार हम इसका जिक्र कर रहे हैं कि ये बजट जो है मिडिल क्लास के लिए बजट है। और इस चीज का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी किया था। बजट सत्र के आगाज होने से पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर मीडिया को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कई सारी चीजों का जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2014 के बाद ये पहला बजट सत्र है, ये पहला ऐसा सत्र होगा जब विदेशी प्रोपागेंडा अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन हर कैबिनेट बैठक में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अब मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बजट जो है अब मिडिल क्लास के लिए बजट है, आम लोगों का बजट होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को घेरता है कि अपने मित्रों को, पूंजीपतियों को खुश करने के लिए सरकार जो है बजट लाती है। आपने देखा कि पिछले बार किस तरीके से विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, ये अंबानी अडानी का बजट है। देश के आम लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। और इस बार जो है मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट जो है अब से थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। तो इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। पूरे देश के लोगों की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई है। सुबह सुबह ही शेयर मार्केट में काफी उछाल देखा गया है। तो आज का ये बजट किसके लिए राहत भरी बजट होगी और इस बजट में कितना जायका होगा, कितनी मिठास होगी, ये देखना फिलहाल बेहद महत्वपूर्ण होगा। पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता संसद भवन पहुंच चुके हैं और महज 2 मिनट बाद 10:58 हो चुका है। 2 से 3 मिनट बाद जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की संसद में अपना ऐतिहासिक बजट पेश करेंगी। और ये जो साड़ी यहाँ पर आप देख रहे होंगे वित्त मंत्री को पहने हुए, ये मधुबनी साड़ी है जो बिहार की गुलारी देवी ने वित्त मंत्री को दिया है, गिफ्ट किया है। वही साड़ी पहनकर जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही है। और बजट पहले से ही कई सारे सवालों के घेरे में है। कल बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण में द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और उसके बाद किस तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई। राहुल गांधी ने कहा कि जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भाषण बोरिंग स्पीच थी। सोनिया गांधी ने कहा कि पुअर लेडी यानी कि बेचारी महिला बोलते बोलते थक गई थी। और इस पर किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की शाही परिवार ने एक बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। ये अपमान राष्ट्रपति मुर्मू का नहीं बल्कि देश के आदिवासियों का है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं और कांग्रेस की फितरत है कि बार बार वो आदिवासी महिला का अपमान करते हैं। तो अब से थोड़ी देर में जो है अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं।
बजट के पहले निर्मला सीतारमन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दही चीनी खिलाई है। ये गरीब किसानों की आकांक्षाओं का बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया है, महिलाओं युवाओं की आकांक्षाओं का बजट है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय बजट पर मोदी कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बजट मिडिल क्लास की बजट है, आम लोगों की बजट है। हम आपको लोकसभा लिए चल रहे हैं, जहां पर निर्मला सीतारमन बजट पेश करेंगी। सुनिए। है कि ये राजस्थान को ही नहीं है, अपितु पूरे हिंदुस्तान को हर वर्ग सदस्यगण, बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी। नो तरीका। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas, focusing on Garib, youth, Annadata, and Nari.
spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our four powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In Phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oilseed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements.
comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian Exclusive Economic Zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector.
MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focus product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand.
Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid-scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence.
Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security Scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy. Public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households, representing 80% of India's rural population, have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery.
Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land, and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an Urban Challenge Fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational, and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be
These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who were paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, SWAMI Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts. And introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance, in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector, along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security.
This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the Tax Department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India post payment
bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score Framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavour. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavour will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit
is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure the availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics
covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports,
I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance